Hello everyone, I welcome you in this unique video series on Six Sigma Black Belt free course, which also includes Six Sigma Green Belt and Six Sigma Yellow Belt course. Yes, it's absolutely free. This is module 4. The language of this video will be English, that is Hindi English mix. सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट के फ्री कोर्स की इस अनूठी वीडियो सीरीज जिसमें ग्रीन बेल्ट और येलो बेल्ट का कोर्स भी सम्मिलित है, में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो की भाषा हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगी। यह है हमारा फोर्थ यानी चौथा मॉड्यूल है। आई एम नाउ डिस्प्लेइंग ऑन योर स्क्रीन द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ दिस ब्लैक बेल्ट कोर्स विच आई विल कवर थ्रू डिफरेंट मॉड्यूल्स। मैं आपकी स्क्रीन पर इस ब्लैक बेल्ट कोर्स का डिटेल्ड सिलेबस डिस्प्ले कर रहा हूँ, जो मैं विभिन्न मॉड्यूल्स के द्वारा कवर करूँगा। द लिस्ट ऑफ टॉपिक ऑफ दिस सिलेबस इज ऑलमोस्ट फाइनल बट द सीक्वेंस में चेंज। इस सिलेबस में दिए हुए टॉपिक्स की लिस्ट ऑलमोस्ट फाइनल है, बट सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो सकता है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिलीज वन मॉड्यूल एवरी वीक और एटलीस्ट वंस इन 15 डेज। मेरी कोशिश रहेगी कि हर सप्ताह या 15 दिन में एक मॉड्यूल रिलीज कर दूँ। फॉर द बेनिफिट ऑफ माई यूजर्स, I am also displaying on your screen the detailed syllabus of Six Sigma Green Belt and Yellow Belt course. Topics which should be covered in a Green Belt course are highlighted in the green color, and topics which should be covered in a Yellow Belt course are highlighted in yellow color. अपनी ऑडियंस की बेनिफिट के लिए मैं सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट और सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट का डिटेल्ड कोर्स भी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। जिन टॉपिक्स को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है वो सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट कोर्स के लिए ज़रूरी हैं, और जिन टॉपिक्स को मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया है वो सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट कोर्स के लिए ज़रूरी है। एंड द फुल सिलेबस इज़ मैंडेटरी फॉर सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट कोर्स, और पूरा सिलेबस सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट कोर्स के लिए ज़रूरी है। बिफोर आई डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स विच आई विल कवर इन दिस मॉड्यूल एंड इन नेक्स्ट मॉड्यूल्स, आई वुड लाइक टू क्विकली टेल यू अबाउट द बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स एंड ऑल्सो अबाउट हाउ यू कैन ऑब्टेन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट, सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट और सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट सर्टिफिकेट थ्रू अस। इससे पहले कि मैं इस मॉड्यूल में क्या टॉपिक कवर किए जाएंगे और आने वाले मॉड्यूल्स में क्या टॉपिक कवर किए जाएंगे उसके बारे में आपको बताऊं, जल्दी से इस कोर्स के बेनिफिट आपको बता देता हूं, और साथ ही ये भी बता देता हूं कि आप हमसे सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट, सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट या सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट का सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। First benefit is that the syllabus of this course itself reveals that this Six Sigma Black Belt course is not less than any Six Sigma Black Belt course in the whole world. In fact, it is better at some places. तो पहली बात तो ये है कि ये Six Sigma Black Belt course दुनिया के किसी भी Six Sigma Black Belt course से कम नहीं है। Second thing is you can complete this course from the comfort of your home in your free time and at your own pace. आप घर बैठे बैठे सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट का फ्री कोर्स अपनी गति से कंप्लीट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कोर्स इज इफ यू विश टू ऑब्टेन अ सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट और सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट और सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट नॉन एक्रीडेटेड सर्टिफिकेट थ्रू अस, दैट इज पॉसिबल बेस्ड ऑन सक्सेसफुली कंप्लीटिंग दिस कोर्स, सक्सेसफुली पासिंग एन एग्जाम एंड अ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. Certificate will be the only paid service, but the course is absolutely free. For any query, you can contact us on our WhatsApp number. सबसे बड़ी खासियत इस कोर्स की ये है, अगर आपको हमसे सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट या ग्रीन बेल्ट या येलो बेल्ट का नॉन एक्रीडेटेड सर्टिफिकेट चाहिए तो वो आपको प्रदान किया जा सकता है, बशर्ते आप इस कोर्स को कंप्लीट करें, एक एग्ज़ाम को पास करें और साथ ही एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें। सर्टिफिकेशन हमारी पेड सर्विस है, बाकी कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है। एंड इफ यू विश टू ऑब्टेन अ लीन सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेट थ्रू अस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. फॉर दैट you have to additionally cover some topics on lean. Kindly read the displayed slide carefully. The additional conditions for lean certificate are highlighted in yellow color. अगर आपको हमसे लीन सिक्स सिग्मा का सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आपको लीन के कुछ टूल सीखने होंगे। कृपया डिस्प्ले की हुई स्लाइड को ध्यानपूर्वक पढ़ें। लीन की एडिशनल कंडीशंस को मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। व्हाट इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन इज द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स विच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माय प्रीवियस मॉड्यूल्स। तो जो आपकी स्क्रीन पर अभी डिस्प्ले किया जा रहा है वो उन टॉपिक्स की लिस्ट है जो मैंने प्रीवियस मॉड्यूल्स में कवर किए हैं।
This is the list of topics which I will cover in this module. ये वो टॉपिक्स की लिस्ट है जो कि मैं इस मॉड्यूल में आपके साथ कवर करूंगा. This is the list of topics for our next module. ये हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल के टॉपिक रहेंगे. And what is being displayed on your screen is the list of topics for our future modules. अब जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है वो उन टॉपिक्स की लिस्ट है जो मैं फ्यूचर मॉड्यूल्स में आपके साथ कवर करूंगा. And as I told you earlier, I will try my best to release one module every week or at least once in 15 days. Since the initial part of this video was very important, hence I spoke everything in Hindi as well as in English. But now I will speak English. That is Hindi-English mix. मेरे हिंदी प्रेमी भाइयों और बहनों, क्योंकि वीडियो का पहला पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने हर चीज़ को हिंदी और इंग्लिश में रिपीट किया. बट इसके बाद मैं इंग्लिश बोलूँगा. इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा और हिंदी थोड़ी कम. मुझे पूरी उम्मीद है उतनी इंग्लिश आपको ज़रूर समझ आएगी. द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टेक नाउ इज़ हाउ टू कन्वर्ट CTQ, critical to quality parameter, into key CTQ. And then to VOP, that is voice of process, with inputs on Kano model and SIPOC, SIPOC approach. Before I start discussing about how to convert CTQ into key CTQ, I am again displaying the flow diagram which I have discussed in module 3 for the benefit of my audience. मैं एक बार दोबारा से वही फ्लो डायग्राम आपके सामने लगा रहा हूँ जो मैंने मॉड्यूल 3 में आपके साथ डिस्कस किया था. So this flow diagram tells us that for being a Six Sigma organization, we have to first capture the voice of customer, which we have already discussed in module 3. Then from those voice of customer, we have to identify CTQ, critical to quality. This is also we have discussed in module 3. And from those CTQs, we have to identify key CTQs, key critical to quality parameters, which we will discuss in this module. And from those key CTQs, we have to capture the voice of the process, that is VOP. And while capturing the voice of the process, we have to identify key CTQ for the process. If key CTQs are within the acceptable limits, we have to monitor them regularly. And if key CTQs are not in control, that is outside the specification, we have to improve them. And how? By taking projects, either through CFT or Kaizens or through Six Sigma methodology. Just to recap, CTQ, that is critical to quality, are measurable characteristics or attribute or parameter of product or service that must meet the customer requirements so as to ensure the customer satisfaction. In a nutshell, CTQ is translating the customer voice, which can be vague or broad, into technical voice. And that technical voice is the voice of our product and services. If we take care of CTQ, we are taking care of voice of customer. Nutshell में CTQ का मतलब ये है कि जो कस्टमर की रॉ वॉइस होती है या वेग वॉइस होती है या ब्रॉडर वॉइस होती है उसको टेक्निकल वॉइस में कन्वर्ट किया जाए और वो टेक्निकल वॉइस होगी प्रोडक्ट और सर्विसेज की. अगर हम CTQ को टेक केयर कर रहे हैं तो हम वॉइस ऑफ कस्टमर को भी टेक केयर कर रहे हैं. Just remember 3 things about CTQ. 1, they must be measurable. 2, they must be monitorable. And 3, they must be actionable. तो CTQ की 3 पहचान है. पहली बात तो ये measurable होने चाहिए, दूसरा monitorable होने चाहिए और तीसरा actionable होने चाहिए. This is the slide which we have already discussed in module 3, that how voice of customer are translated into CTQ. For example, against the voice of customer that I hate waiting so long for delivery, the need of the customer was fast and on-time delivery, and the CTQ was identified as delivery time less than or equal to 35 minutes, which is our service-related parameter. So if we work on our internal target of 35 minutes, we can largely meet the customer expectation on delivery time. Rest, you can read it from the slide. In the case of hospital, where the customer wants the safe treatment, we have defined CTQ as zero medication error.
तो हॉस्पिटल के केस में जहाँ कस्टमर की वॉइस ये थी कि मुझे सेफ ट्रीटमेंट चाहिए, हमने CTQ आइडेंटिफाई किया था कि जीरो मेडिकेशन एरर होना चाहिए। I have already taken these two examples in detail and depth in my last module. So let me move forward and take new examples. ये दोनों examples मैं already आपके पिछले मॉड्यूल में कवर कर चुका हूँ, तो मैं कुछ नए examples के साथ आगे बढ़ता हूँ। The example which I am taking now is from the banking sector. जो example मैं आपके सामने ले रहा हूँ वो एक banking sector से है। Suppose the voice of most of the customer is that we want a smooth experience when we open an account. So this voice of customer is very vague and very broad. Based on the voice of customer, the implied need of the customer can be quick process, simple paperwork, and friendly staff. What is stated need and what is implied need that I have covered in module 1 and module 3. Stated need क्या होती है, implied need क्या होती है, वो मैंने module 1 और module 3 में cover किया हुआ है. Against the quick process, bank has identified CTQ as account opening time. For simple paperwork, they have defined that there should not be more than 2 forms and not more than 2 signatures. And for friendly staff, they have identified customer satisfaction score as CTQ, and they have defined the limit also, and the limit is it should be greater than or equal to 4.5 on a scale of 1 to 5. Whatever examples I have shared till now were in a tabular form. Though CTQ tree is not mandatory, but for better visualization, let us understand VOC to CTQ by CTQ tree. This CTQ tree can be in a horizontal form or in a vertical form. Whatever examples I am sharing with you in a horizontal form. हालांकि VOC से CTQ के जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किए वो सभी टेबुलर फॉर्म में थे, बट इसको CTQ ट्री के द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। हालांकि CTQ ट्री मैंडेटरी नहीं है, बट CTQ ट्री से एक विजुलाइजेशन अच्छी आ जाती है। CTQ ट्री हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी। मेरे एग्जांपल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। पर्पस ऑफ CTQ ट्री इज टू ब्रेक द कस्टमर वॉइस which can be in a vague form or in a broader form into measurable CTQ, and these CTQ are product related or service related characteristics. And the purpose of CTQ tree is also to assign the tolerance or specification to CTQ parameters. The structure, that is order of CTQ tree, is very important. First, it should have need of the customer. Need will come through the voice of customer. Second, it should have drivers. एंड थर्ड इट शुड हैव CTQ. CTQ ट्री में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो कस्टमर की नीड क्या है, दूसरी बात ड्राइवर्स क्या है, और तीसरा CTQ क्या है. हाउ टू मेक अ CTQ ट्री, आई एम एक्सप्लेनिंग इट विद एन एग्जाम्पल. For example, the voice of the customers who are ordering pizza, that they want a good pizza delivery service. First, I am explaining in a tabular form. Then the same example I will take in a CTQ tree diagram form. So what is the need of the customer? Good pizza delivery service. Drivers which can lead to the satisfaction of the customers are fast delivery, hot and fresh pizza, good customer service. And CTQ based on the drivers can be pizza delivery within 30 minutes, pizza temperatures upon delivery greater than 60 degrees centigrade, customer call answered within 3 rings, and order accuracy greater than 98%. Now I am displaying the same thing in a CTQ tree form, and you can see the difference. The difference is visualization. Now each and everything is well connected. 2 CTQs are linked with good customer service. One is answer customer calls within 3 rings, and second is order accuracy should be greater than 98%. So in a nutshell, if we will meet CTQ, that is our product and delivery parameters, then we will meet the need of the customer. And once we will meet the need of the customer, we will meet the voice of the customer, which will lead to the customer satisfaction, ultimately resulting in growth of the business. पिज़्ज़ा डिलीवरी के एग्जाम्पल को आपने एक तो टेबुलर फॉर्म में देखा और अब आपने CTQ ट्री डायग्राम फॉर्म में देखा. CTQ ट्री डायग्राम से विजुलाइजेशन अच्छा हो जाता है और कौन सी चीज कहाँ से कनेक्टेड है हमें पता चल जाता है. If you wish to make the vertical form of this diagram, then you can rotate the whole diagram by 90 degree clockwise. Another example which I am taking from the banking sector is that the voice of the customer or need of the customer is they need a reliable and convenient online banking service.
So based on this need, there can be two drivers. One is secure transactions and second is quick response. Against the secure transaction, the bank has identified CTQ as unauthorized access incident should be 0. And against the quick response, the bank has decided CTQ as website uptime should be greater than 99.99%. Page load should take less than 3 seconds. And the availability of the site should be 24/7. This example is from the automobile. For example, the voice of the customer is they need safe car. So based on the safe car, the driver can be performance of brake, impact test, functionality of airbag. Against the brake for performance, this company has identified CTQ as that the braking distance should be less than 40 meters at 100 km per hour. For impact test, the vehicle should pass in the impact test as per the specified specifications. For the airbag and its functionality, they have decided that the airbag should be provided for all seats and the airbag deployment time should be less than 30 milliseconds. तो सेफ कार के लिए 3 इंडिकेटर हुए, एक तो ब्रेक का परफॉर्मेंस हुआ, एक एयरबैग की फंक्शनलिटी हुई और एक इम्पैक्ट टेस्ट हुआ और सभी के CTQ आइडेंटिफाई किए गए. As I promised in module 3, I will take the manufacturing sector example also. For example, the voice of the manufacturer to its supplier is very vague or very broad, that we want right product at right time at competitive price. Based on this, drivers can be no complaint related to the product, on-time delivery, and cost reductions. And different CTQs are identified against each driver. For the no complaint related to the product, the CTQ was identified fitment related issues at customer end should be less than 50 ppm. Warranty related issues should be less than 3.4 ppm. Product rejection due to out of specification at customer end should be less than 100 ppm. Response time to any complaint should be less than 24 hours. For on-time delivery, CTQ identified were delivery schedule adherence should be greater than 98%. Delivery of wrong part should be less than 100 DPMO. And for the cost reduction, they took an internal target that the OE should be greater than 90%, reducing cost of poor quality by 20% every year. And they took an ambitious target that we will do VE projects, which can yield a saving of 100 million rupees per year. Let me clarify a few things. First of all, the identification of CTQ organization-wide in line with voice of customer is required only when a company wants to adopt Six Sigma practices. Means an organization wants to implement Six Sigma across the organization. And if they want to implement Six Sigma across the organization, they have to build the organization structure of Six Sigma within the organization. And what is that organization structure? I will discuss in the next module. And once that organization structure is in place, that is their responsibility to identify CTQ parameters organization-wide. And majorly, this responsibility is of the executive leadership team, Six Sigma champions, master black belt, and the steering committee. So in short, it is not the responsibility of Six Sigma black belts, green belt, or yellow belt to identify organization-wide CTQ parameters. They have to only show how their project is important and in line with any CTQ which is linked with VOC. We will discuss it in depth and detail when we will start DMAC approach, define, measure, analyze, improve and control approach. Why I'm saying so? Because the identification of organization-wide CTQ is a massive work and it requires lot of resources. And if somebody expects from a black belt to achieve it alone is a wrong expectation. So now the next step. So after this exercise, we may end up getting hundreds of CTQ for the organization. Can we work on all the CTQs together? Not practically possible at all. Why? Because of resource constraint, because of technological constraint, because of financial constraint, because of budget constraints. So what is the logical sequence? Logical sequence says that we have to prioritize these CTQ and identify key CTQ. So key CTQs are prioritize CTQ parameters. तो अगला स्टेप क्या होगा? इतने सारे CTQ इकट्ठे हो जाएंगे, सब पे एक साथ काम कर नहीं सकते, पॉसिबल भी नहीं है, ना बजट होता है इतना, ना रिसोर्सेज होते हैं, टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं. तो लॉजिकल सेंस क्या कहती है कि हमें इन CTQs को प्रायोरिटाइज करना होगा. और प्रायोरिटाइज CTQ को हम क्या कहते हैं? की CTQ.
For prioritization, we can use various tools. One is Pareto analysis, second brainstorming. Both these tools we will learn in depth and detail in our subsequent modules. Voting by Six Sigma committee, Six Sigma champions, master black belt, or cost benefit analysis. If you are well versed with FMEA, then you can use FMEA to identify key product and process parameters. CTQ से की CTQ को प्रायोरिटाइज करने के लिए हमें कुछ प्रायोरिटाइजेशन टूल्स का सहारा लेना होगा, जैसे पेरेटो एनालिसिस, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये दोनों टूल्स हम आने वाले मॉड्यूल्स में डेप्थ और डिटेल में सीखेंगे। वोटिंग या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अगर आपको एफएमई की अच्छी नॉलेज है तो आपकी प्रोडक्ट एंड प्रोसेस पैरामीटर्स एफएमई के द्वारा भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर आर अदर मैनेजमेंट टूल्स सच एज स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, और अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, etc. I will try to cover FMEA and these tools separately in my future videos. इन टूल्स के अलावा कुछ मैनेजमेंट टूल्स हैं, जैसे स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं। ये टूल्स मैं एक अलग वीडियो सीरीज में कवर करूंगा। बिकॉज आई नेम्ड माई कंपनी सिंपली ध्रुव एंड सिंपली हेयर इज टू मेक थिंग्स सिंपल, so let us learn how to prioritize in a very simple manner and in a logical manner. क्योंकि मेरी कंपनी का नाम सिंपली ध्रुव है, जिसमें सिंपल का मतलब है चीज़ों को सरल करना। तो जब तक हम वो टूल नहीं सीखते तो हम प्रायोरिटाइज कैसे करें इसको सरल तरीके से और लॉजिकल तरीके से सीखते हैं। सो आवर लॉजिकल थिंकिंग सेज those CTQs which are important for business should come first. तो हमारी लॉजिकल थिंकिंग ये कहती है कि जो CTQ हमारे बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है वो पहले आने चाहिए। And how to decide which are important for the business? And again, our simple and logical thinking says those CTQs which can lead to higher customer dissatisfaction, leading to our loss of business in short term and long term. Short term should be our first preference and long term should be our second preference. But we should not ignore the long term. और ये कैसे डिसाइड करें बिजनेस के लिए कौन इम्पॉर्टेंट है? और दोबारा से हमारी सिंपल और लॉजिकल थिंकिंग ये कहती है तो वो CTQ पहले लेने चाहिए जिनकी वजह से कस्टमर को हायर डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है और जिससे हमारे बिजनेस का लॉस हो सकता है। शॉर्ट टर्म वाले पहले ले लेने चाहिए, लॉन्ग टर्म वाले बाद में ले लेने चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों को भूलना नहीं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन कम टू आवर माइंड इज हाउ टू डिसाइड which CTQ can lead to higher dissatisfaction of customer, and the answer to this question lies in Kano model. अब ये कैसे पता करें कि किस CTQ से कस्टमर को हायर डिससेटिस्फेक्शन होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कानो मॉडल में छुपा हुआ है। सो आई एम नाउ गोइंग टू टेक कानो मॉडल विच इज यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटाइजेशन टूल टू आइडेंटिफाई की CTQs। तो अगली चर्चा मैं कानो मॉडल की करने जा रहा हूं, जो कि CTQ से की CTQ को प्रायोरिटाइज करने में हमारी मदद करेगा। कानो मॉडल is a very good framework for understanding the customer satisfaction and how different types of product and service features impact that satisfaction. It was developed by Professor Noriyuki Kano in 1980s. X-axis of Kano model graph represents the fulfillment of need of the customer. Negative X side means needs are not being met and positive X side means needs are being met. Y-axis represents the customer satisfaction. Positive Y side means customer is satisfied and negative Y side means customer is dissatisfied. On your screen, you can see three broad lines in this graph. The red line, which is at the bottom of the graph, represents the must be or the basic needs. Orange line represents the performance needs and the green line represents the delighters. The basic logic behind the Kano model is that not all the product or service features affect the customer satisfaction in the same way. Some features delight the customers, while others are simply expected. Let us understand these three lines one by one. First line was red line, which represents must be needs or basic needs. These are expected features, and if they are missing, the customer will be highly dissatisfied. Performance needs. Performance needs means more is better for the customer. As the performance increases, the customer satisfaction increases. And delighters means it is unexpected features. The absence will not make any difference to the customer, but the presence may pleasantly surprise the customer. बेसिक नीड वो होती हैं जो कि चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं है तो कस्टमर हाईली डिससेटिस्फाइड होता है।
परफॉर्मेंस नीड वो होती हैं जितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस होंगी उतना ही कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा। और डिलाइटर नीड्स वो होती हैं अगर वो नहीं भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर होती हैं तो कस्टमर को काफ़ी अच्छा लगता है। Now I will share the customer reaction of each and every need. Must be needs. If present, the reaction of the customer will be neutral. But if absent, the reaction of the customer will be very dissatisfied. Performance needs. If present, customer will be very satisfied. If absent, the customer will be highly dissatisfied. Delighters, if present, customer will be very satisfied. But if absent, will not make any difference to the customer. Let me explain it with the example of mobile phone. The must be need for a mobile phone is that it should be able to receive and make calls. So if a phone can receive or make phone calls, the reaction of the customer will be neutral. But if absent, then the customer will be highly dissatisfied. The purpose of the phone is to make and receive calls. The performance need can be longer battery life. If there will be poor performance, the customer will be highly dissatisfied. And higher the battery life, higher will be the customer satisfaction. A delighter can be a free wireless charging pad along with mobile. If it is present, customer will be delighted. But if it is absent, customer will not notice it. One more example I'm taking, which is of a car. The must be need of the car is the brake and airbag should function. If they will function, the response of the customer will be neutral. But if they will not function, the customer will be highly dissatisfied. Performance need can be the fuel efficiency of 20 km per liter. If the performance is above 20 km per liter, the customer will be highly satisfied. And if the performance is below 20 km per liter, customer will be highly dissatisfied. As the fuel efficiency goes up, the customer satisfaction will go up. And as it will go down, the customer satisfaction will go down. The delighter can be self-parking feature in a mid-range car. If it is present, customer will be highly satisfied. But if it is absent, the customer will not notice it until unless others competitor are providing it. As per the Kano model, there are two more features or two more needs. One is indifferent need feature, which is shown in the black line, that is x-axis. The absence or presence will not make any difference to the customer. And second is reverse feature or reverse need. That means if that is present, it will highly dissatisfy the customer. And on the other side, if it is absent, it will lead to the satisfaction of the customer. Wherever I'm using need can be also called as features. दो टाइप की नीड या फीचर्स और होती है कानो मॉडल में. इंडिफरेंट नीड वो होती है अगर वो है या नहीं है उससे कस्टमर के सेटिस्फेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता. और दूसरी है रिवर्स फीचर या रिवर्स नीड. अगर वो है तो कस्टमर हाईली डिससेटिस्फाई होगा और अगर नहीं है तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा. मतलब उल्टा है. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ अ मोबाइल, there is a built up compass app. So if it is there or not there, it will not make any difference to the customer satisfaction. Absence or presence of compass app will not affect most of the customers. Reverse feature can be too many apps are already installed. So absence of this will satisfy the customer and presence of this will dissatisfy the customer. In case of car, the indifferent feature can be heated steering wheel. And in tropical countries, presence or absence of it will not make any difference to the customer satisfaction. And the reverse feature or reverse need can be artificial engine noise in electrical cars. So presence of it will dissatisfy the customer, absence of it will satisfy the customer. When I am saying customer means most of the customers. तो अगर हमने इंडिया जैसी कंट्री में कार में एक हीटेड स्टीयरिंग व्हील दे दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कस्टमर सेटिस्फेक्शन में. और अगर हमने इलेक्ट्रिकल कार में एक आर्टिफिशियल इंजन की नॉइस वाला फीचर दे दिया तो उसके होने से कस्टमर दुखी ही होगा, सुखी नहीं होगा. बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन यू मस्ट गॉट अ हिंट दैट दोज CTQs which affects basic needs and performance needs of the customer should be given the highest priority for being key CTQ parameters. इस डिस्कशन से आपको जरूर फायदा हुआ होगा कि वो CTQs जिससे कस्टमर की बेसिक नीड या परफॉर्मेंस नीड इफेक्ट होती हैं उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको की CTQ में पहले जगह मिलनी चाहिए. आई एम डिस्प्लेइंग एन एग्जांपल वेयर अ कस्टमर हैज बुक्ड अ रूम इन अ होटल. आई होप यू विल फाइंड इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. मैं आपकी स्क्रीन पर होटल बुकिंग का एक एग्जांपल लगा रहा हूँ
मुझे पूरी उम्मीद है ये एग्जाम्पल अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा और आपको समझ में आ जाएगा। बिफोर फाइनलाइजिंग की CTQ, one of the advice which I generally give it to my client is that kindly confirm it from the customers, internal teams, core committees. When I say core committee, Six Sigma core committee and project sponsors as appropriate. तो की CTQ फाइनल करने से पहले एक बार कस्टमर से, इंटरनल टीम से, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर से, सिक्स सिग्मा कोर कमेटी से कंफर्म कर लीजिएगा। So using Kano model, the food delivery app has highlighted 3 CTQ as key CTQ. One is delivery time less than or equal to 35 minutes. Second is temperature on delivery that is greater than or equal to 60 degrees centigrade. And third is wrong product delivery cases less than 3.4 ppm. Why delivery time was chosen? Because it is a performance need. Why temperature of food? Because the customer has ordered a hot food and the food should be delivered hot. It's a basic need. Why no wrong product delivery was chosen as key CTQ? Because it is also a basic need. तो कानो मॉडल का प्रयोग करके फूड डिलीवरी ऐप ने 3 की CTQ चुने। पहला डिलीवरी टाइम, बिकॉज ये परफॉर्मेंस नीड है। दूसरा, जब खाना डिलीवरी किया जाए तो उसका टेम्परेचर 60 डिग्री से अबव होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नीड है। जब खाना हॉट मांगा है तो हॉट मिलना चाहिए। और तीसरा, रॉन्ग डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि ये भी बेसिक नीड है। दो ऐप क्रैश रेट इज अ परफॉर्मेंस नीड, बट दे फाउंड दैट देयर ऐप क्रैश रेट इज लेस देन the targeted value, so they put it under monitoring rather than putting it in a Six Sigma project. ऐप क्रैश रेट को उन्होंने परफॉर्मेंस नीड माना, बट क्योंकि उनकी ऐप क्रैश रेट टारगेट से काफ़ी कम थी तो उन्होंने उसको मॉनिटरिंग में डाल दिया। दे डिड नॉट डिफाइन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एज की CTQ बिकॉज दे फाउंड दैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अ आउटकम ऑफ अदर CTQs। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को उन्होंने की CTQ नहीं माना, इसलिए नहीं माना क्योंकि उन्हें लगा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाकी CTQ का आउटपुट है। इन केस ऑफ हॉस्पिटल्स, दे आइडेंटिफाइड की CTQ एज वेटिंग टाइम लेस देन और इक्वल टू 10 मिनट्स फ्रॉम द चेक इन स्टेज एंड जीरो मेडिकेशन एरर। हॉस्पिटल के केस में उन्होंने जीरो मेडिकेशन एरर को की CTQ माना और वेटिंग टाइम 10 मिनट से कम होना चाहिए। वेटिंग टाइम कैन बी परफॉर्मेंस नीड एज वेल एज बेसिक नीड. It is a basic need in case of emergency, and zero medication error is a basic need because if it is a hospital, safe treatment is a basic need. They did not consider sanitization every 2 hours as key CTQ because they categorize it under indifferent need or delighter. They thought that the satisfaction score is the outcome of other CTQs, so they did not consider satisfaction score as key CTQ. In case of manufacturing sector, they identified 4 basic needs: no fitment related issue at customer end, product should not be out of specification, delivery schedule adherence, and no wrong delivery of parts. Because these 4 were identified as basic needs, so they have identified them as key CTQ. They have also identified 2 performance needs. One is no warranty related problem, and second is response time to complaints within 24 hours. So based on the performance need, they have also identified these 2 CTQ as key CTQ. तो मैन्युफैक्चरिंग के केस पे 4 चीज़ों को उन्होंने बेसिक नीड माना। पहला तो कस्टमर के यहाँ पे कोई फिटमेंट का इशू नहीं आना चाहिए। दूसरा, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन नहीं होना चाहिए। तीसरा, डिलीवरी शेड्यूल का अडेरेंस होना चाहिए। और चौथा, रॉन्ग डिलीवरी ऑफ पार्ट नहीं होना चाहिए। और 2 CTQ को उन्होंने परफॉर्मेंस नीड माना। एक तो वारंटी इशू नहीं आने चाहिए और दूसरा, रिस्पॉन्स टाइम कंप्लेंट का 24 आवर्स होना चाहिए। बेस्ड ऑन बेसिक नीड और बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस नीड, ये 6 पैरामीटर को उन्होंने की CTQ की तरह आइडेंटिफाई किया। दे लेफ्ट आउट COPQ, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, OE एंड VAVE because they categorize them in indifferent needs. Though they have identified cost of poor quality, that is COPQ, as indifferent need, but still they have considered that as one of the key CTQ because the internal rejection can lead to external rejection. हालांकि उन्होंने कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को इंडिफरेंट नीड माना, बट फिर भी उसको की CTQ में कंसिडर किया क्योंकि इंटरनल रिजेक्शन एक्सटर्नल रिजेक्शन में कन्वर्ट हो सकती है। उन्होंने OE और VAVE प्रोजेक्ट्स को इंडिफरेंट नीड मानकर की CTQ की कैटेगरी में अभी फिलहाल नहीं लिया। One thing I would like to add here is the key CTQ are dynamic, not static, because with respect to time,
the expectation or the voice of customer might change. एक बात मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूँगा कि CTQ डायनेमिक होते हैं और वो फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं. So while identifying the key CTQ, we should prioritize those CTQ first which are the need of the hour and which can impact our business badly. तो पहली बात तो प्रायोरिटाइज करने में हमें वो CTQ का ध्यान रखना चाहिए जो कि अभी समय की जरूरत है और जो हमारे बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं. सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? यस, आई एम अगेन पुटिंग द सेम फ्लो डायग्राम. Those key CTQ which are under control, which are under the specification limit, they will be monitored. And those CTQs which are not within the limit, which are not as per the expectation, will be improved upon. And how? By taking Six Sigma projects. तो अगला स्टेप क्या होगा? बिल्कुल ठीक, वो की CTQ जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा और जो की CTQ अच्छा नहीं कर रहे, लिमिट से बाहर है, उनको इम्प्रूव किया जाएगा. और कैसे? उनके ऊपर सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट्स लिए जाएंगे. इन अ सिक्स सिग्मा कंपनी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स टू ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट और येलो बेल्ट इज डिसाइडेड बाय द कोर कमिटी और चैंपियंस और मास्टर ब्लैक बेल्ट्स. We will discuss core committee, Six Sigma champion, master black belt in our next session. Six Sigma कंपनी में ब्लैक बेल्ट को, ग्रीन बेल्ट को या येलो बेल्ट को क्या प्रोजेक्ट दिए जाए वो सिक्स सिग्मा कोर कमेटी या चैंपियंस या मास्टर ब्लैक बेल्ट डिसाइड करते हैं. बट यू विल बी सरप्राइज दैट मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर नॉट फॉर की CTQ बट फॉर सब पार्ट्स और वॉइस ऑफ प्रोसेस. और ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि ये प्रोजेक्ट्स की CTQ के लिए नहीं होते बल्कि वॉइस ऑफ प्रोसेस जिसको हम VOP कहते हैं और सब पार्ट्स के लिए होते हैं. सो टाइम नाउ to understand CPOC, that is supplier input, process, output and customer, and VOP, voice of process. I'm displaying on your screen the CPOC diagram, that is supplier input, process, output and customer. To meet the customer expectation that is on the right side of the diagram, we have to meet the product or service parameter. Product and service parameter we have already understood, that is called CTQ parameter. But that product or service parameter is outcome of subparts or process or both. How we will understand in the next example. So if our process will be right, then only we will produce good parts, and if our parts are good, then we will produce good product or service which will ultimately be supplied to the customer. And the process also has some inputs, maybe from the another process, sub-process or from the supplier. In a nutshell, if we want to control the output, we have to control the input. And in Six Sigma, we have to work on process. If process is right, then the product will be right. Kindly also pay attention to the feedback loop in this diagram. इस diagram के feedback loop पर भी ध्यान दीजिए. Feedback loop demonstrate a good connect of internal and external customer. So ultimately, to work on the final product or service, we have to work on internal processes and internal products. Let us understand this diagram with some examples. In case of good delivery of pizza example, we have identified one of the CTQ as delivery time should be less than or equal to 30 minutes. Let us understand how the key CTQ of final product or service should be broken into voice of process or voice of internal products. The slide which I have displayed on a screen indicates that if we have to control delivery within 30 minutes, which is identified as one of the key CTQ, we have to go one level below this to identify what are the processes which are responsible for meeting this as a product requirement or service requirement. And the process can be order receiving to the kitchen within 15 seconds, ensuring all items are made as per the order within 12 minutes, packing within 2 minutes, kitchen to dispatch less than 1 minute, and delivery to home equal to or less than 10 minutes within 5 kilometers. Based on their internal measurement, internal data and facts and figure, they found that packing is taking more time than desired, which is ultimately leading to delivery time
more than 30 minutes. So that process parameter was affecting the product or service parameter. So they have identified this as key voice of process. Means if they will work on this voice of process, that is key CTQ of the process, they will meet the key CTQ of service and product. Another critical parameter of the process, that is voice of process, they identified that the delivery to home is taking more than 10 minutes. So they have identified that also as key voice of process or key CTQ of the process. Why packing was taking more time, they have identified that the minimum stock of packing material was not ensured at a level of 99%. So whatever I have highlighted in dotted lines are key CTQ of process or key CTQ of sub-process. So they have identified these as key CTQ process parameters, and that is called voice of process. If we work on key CTQ process parameter, we will achieve key CTQ product parameter. And if we will achieve CTQ product parameter, we will achieve the customer satisfaction. In the example of manufacturing, one of the key CTQ which was identified was that the fitment related issues at the customer end should be less than 50 ppm. This supplier is supplying n number of products. Internally, it was again broken down into different products. You can say products or parts, and within that product, they have identified what is the critical parameter which can cause the fitment issue of that product at customer end. Say dimension X1, X2. And based on their internal study, based on their data, they have identified product 2 and product 3 is majorly causing this problem at customer end, and this problem means fitment problem. So they have identified these two as key CTQ internal parts or internal products. And these products are not generated themselves, they are being generated by a process. Suppose for making a product 2, there are number of processes, process 1, process 2, process 3, process 4, and maybe a child part which is being supplied by a supplier. So they have categorized process 1, process 2, process 3, process 4, process 5. And then they have identified what is critical in that process, what is critical parameter in the process. So ultimately, they are reaching to the voice of the process, and they will identify what is the critical parameter of the process which is causing trouble to the internal product parameter, ultimately causing trouble to the final product parameter, ultimately causing the trouble to the customer. So in short, if we work on S means supplier, I means input, and process, P means process, we will achieve the output, that is key CTQ, and then we will service the customer. So basically the Six Sigma projects are taken on supplier, input, and process so as to achieve the output. Output is a goal, and the customer satisfaction is a bigger goal. Whatever I have highlighted in dotted lines are key CTQ of a process or subpart. So in short, there can be n number of key CTQ parameters of the process against a single key CTQ of final product or service. In a nutshell, key CTQ of service and product is a very big area. It has to be broken down into subpart, sub-processes, and then we have to assign the projects on subparts and sub-process so as to achieve the key CTQ. So there can be number of key CTQ in an organization, and based on number of key CTQ, there can be n numbers of subparts, sub-product, sub-processes or processes. So for Six Sigma projects, these large CTQs, which are of final product or service, should be broken into key CTQ of subparts or subproducts and processes. I hope this diagram will help you how we can assign projects to black belt and green belts. So in the case of pizza delivery, we have identified that the packing is being delayed. So to bring the packing time within 2 minutes,
can be one of the black belt project. Then the second black belt project can be to ensure that the delivery from the facility to home is within 10 minutes. But for that also they have to again do the process mapping, process and sub-process. Third project can be that the minimum stock of raw material should be available more than 99%. And for the green belt, they have identified that the minimum stock of packing material should be always more than 99%. Raw material is more critical than packing material. So they have assigned raw material project to black belt and the packing material project to the green belt. But having said that, black belt can always take help of green belts and yellow belts for execution of their projects. Since the black belt are expected to execute a bigger level of project, so in case of manufacturing, this company has assigned the fitment issue of product 1, product 2 and product 3 to one black belt and the fitment issue of product 4 and product 5 to another black belt. And for the fitment issue related to product 1, black belt 1 took the help of green belt 1 so as to control process 1, 2 and 3. These are all indicative examples for reference only. I hope it is very useful. Let me quickly tell about myself. जल्दी से अपने बारे में बता दूं. I am Pankaj Agarwal. I am a corporate trainer, motivator, change management consultant, advisor and life coach. I am also a trainer on Six Sigma Black Belt and Six Sigma Master Black Belt. The name of my company is Simply Dhruv. Simply Dhruv was started in year 2003 by me and my wife Madhusmita Agarwal, where simply means to make things simple and Dhruv is the name of my son. I have also written a book on problem solving which I have not published for market yet. You can visit us on our website www.simplydhruv.in. If you have any query, you can drop your query in the comment box of this video or you can message me that query on my WhatsApp number. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं या उस क्वेरी को आप मुझे WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं. I will continue this discussion in next module, that is module 5. In module 5, I will also cover the organization structure for Six Sigma. What else is there in module 5 is being displayed at the end of this video. इस चर्चा को अगले मॉड्यूल 5 में भी जारी रखूंगा. मॉड्यूल 5 में मैं सिक्स सिग्मा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की भी चर्चा करूंगा. बाकी मॉड्यूल 5 में क्या टॉपिक हैं वो मैंने इस वीडियो के अंत में डिस्प्ले किए हुए हैं. इफ यू डोंट वांट टू मिस द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट मॉड्यूल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो नाउ. अगर आप अगले मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन समय से चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत ही लाइक और सब्सक्राइब कर दें. आई हैव ऑल्सो मेड very useful and powerful video on behavioral subject. So if you will like and subscribe my channel, you will get access to those videos also. मैंने behavioral और motivational subject पर भी बहुत powerful video बनाए हैं. अगर आप मेरे चैनल को like और subscribe करते हैं तो आपको उन वीडियो का भी access मिल जाएगा. I will continue this discussion in next module, that is module 5. In module 5, I will also cover the organization structure for Six Sigma. What else is there in module 5 is being displayed at the end of this video. इस चर्चा को अगले मॉड्यूल 5 में भी जारी रखूंगा. मॉड्यूल 5 में मैं सिक्स सिग्मा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की भी चर्चा करूंगा. बाकी मॉड्यूल 5 में क्या टॉपिक हैं वो मैंने इस वीडियो के अंत में डिस्प्ले किए हुए हैं. इफ यू डोंट वांट टू मिस द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट मॉड्यूल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो नाउ. अगर आप अगले मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन समय से चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत ही लाइक और सब्सक्राइब कर दें. आई होप you would have liked this video and this video was very useful to you. मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये आपके बहुत काम का होगा. If you wish to watch my previous videos and upcoming videos, please don't forget to like and subscribe this video. अगर आप मेरे बनाए हुए वीडियो देखना चाहते हैं और भविष्य में आने वाले वीडियो की समय पर जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच. सी यू सून. फिर मिलेंगे.